Okay, so hello all. This is the basic, you can say the basic unit on computers, which is there in the syllabus of everyone. So these are the basic things that we people should be aware of. So today we will be covering all the basic things in a single lecture, right? So let us just get started. The first thing is, what is a computer? Computer क्या होता है? What is a computer? So a computer is an electronic device that manipulates the information or the data. So it can change the information or you can say the data. It has the ability to store, retrieve and process the data. You may already know that you can use a computer to type documents, then to send email, then to play games, then to browse the web. तो ये सब चीज़ें तो आप कंप्यूटर के साथ करते हो. But you can also edit or create spreadsheets, presentations or even videos, right? So this all functionalities are included in the basic unit that is known as computer, right? Then the next thing is, what is the difference between hardware and software? Hardware और software में क्या difference है? See, class hardware is any part of your computer that has a physical structure, जिसका कोई physical structure होता है, जिसको आप physically touch कर सकते हैं और you can say that it is tangible. जो tangible है उसको हम बोलते हैं कि that is hardware. For example, your keyboard, your mouse, then it also includes all the computer's internal parts, right? आप देख भी सकते हैं यहाँ पर. तो ये जो भी internal part है इस पूरे को हम बोलते हैं that this is something known as hardware, right? Then what is software? Software is any set of instructions. Software कुछ वो instructions हैं that tells the hardware what to do. ये hardware को बताता है कि करना क्या है and how to do it और कैसे करना है. For example, web browsers, games, word processors, etc. You can see now these all are the examples of software, right? So these are the basic terms that we people should be aware of, we people should be familiar with. तो ये सारा basic आपको इस lecture में cover होगा. Next thing, everything you do on your computer will rely on both hardware and software. आप कुछ भी काम करें कंप्यूटर पर उसके लिए हार्डवेयर भी important है and software भी important है. For example, right now you may be viewing this lesson in web browser or you are using your mouse to click from page to page. As you learn about different types of computers, ask yourself about the differences in their hardware. तो जब आप वेब ब्राउजर में कोई चीज़ देख रहे हैं, so that is actually a software. माउस को क्लिक कर रहे हो, then that is actually your hardware. So you are using it in your daily use, right? Then what are the different types of computers? What are the variety types of computers are we people aware? We should be aware of. So when most people hear the word computer, they think of a personal computer. For example, a desktop or a laptop. However, computers come in many shapes and sizes and they perform many different functions in our daily lives. बहुत तरह का काम करते हैं. For example, when we withdraw cash from an ATM, अगर आप ATM से cash withdraw कर रहे हैं or you are scanning groceries at the store or you are using a calculator, you are actually using a type of a computer. आप एक computer ही use कर रहे हैं. So the first type over here is a desktop computer, right? So many people use desktop computers at work, at home, or at school. Desktop computers are designed to be placed on a desk and they are typically made up of a few different parts including computer case, monitor, keyboard and mouse. So the first type is desktop computer, right? Then the second type is laptop computers. So the second type of computers that you may be familiar with is a laptop computer, commonly called as a laptop. So laptops are battery powered computers. इनमें बैटरी लगा हुआ है. They are more portable than desktops और ये portable होते हैं as compared to desktops. और portable होने से क्या फायदा है? They are allowing you to take them or to use them almost anywhere. आप उसे कहीं भी ले जा सकते हैं. The way it has been shown in the picture. Then the third type of computer is tablet computers. So what are tablet computers, or you can call it as tablets also? They are handheld computers. इनको आप हाथ में रखते हैं.
They are even more portable than laptops. ये लैपटॉप से भी ज़्यादा पोर्टेबल है. Instead of keyboard or mouse, tablets use a touch sensitive screen. यहाँ पर आपके पास एक touch screen होता है, which is actually used for typing and for navigation. The example would be iPad. So iPad is an example of a tablet, right? And we are basically moving towards this third type of computers, that is the tablet computers, right? Then let's just talk about the servers. So what is a server? See, again, server is also a computer that serves up the information to other computers on a network. ये एक network के ऊपर दूसरे computers को serve करता है. उसको हम बोलते हैं server. Now that is the basic definition. For example, whenever you use the internet, जब भी आप internet को use कर रहे हैं, you are looking at something that is stored on the server. Then many businesses also use local file servers to store and also to share the files internally, right? So that is something known as server. सर्वर वो है जो आपके फ्रंट एंड पे नहीं बैक एंड पे आप यूज कर रहे हैं और वहां पर आपका सारा का सारा जो काम है उसकी एक बैकअप रखी जाती है एंड इन केस यू loses any of your information you can get a copy from there, right? Then many of today's electronics are basically specialized computers, though we don't always think of them that way. So here are a few common examples. Then we have smartphones. Then that means many cell phones can do a lot of things that computer can do, including browsing on the internet, playing games. They are known as smartphones. Then there are wearables. Wearable technology is a general term used for a group of devices. Now that includes fitness trackers, smartwatches that are designed to be worn throughout the day. These devices are often known as wearables for short. वो डिवाइसेस जैसे अगर मैं अपने आपके स्मार्ट वॉच की बात करती हूँ, so it is keeping the track of the person for the whole day. So that means it is wearing out, and that is why we call it as wearables. Then another thing is game console. So that is a specialized type of computer which is used for playing video games on your TV. This everyone knows. Then televisions. So many TVs now include the applications or apps that is going to let you access variety of online content. आप बहुत तरह का online content TV से भी access कर सकते हैं. For example, आप अपने वीडियो को stream करना चाह रहे हैं from internet directly onto your TV. So with the helps of the basic applications, you can do it. Now those applications class are embedded in your televisions, right? Then peripherals. Now this is very important. Peripherals are that thing that you can use with your computer. Anything that you can attach with your computer is known as peripherals. So the most basic computer setup usually includes the computer case. Basically computer case hota hai, monitor, keyboard and mouse. But you can also plug many different types of devices into the extra ports on your computers. Now they are known as peripherals. For example, printers. Printer क्या है? It is used to print the documents, to print the photos or anything else that appears on your screen. ठीक है, इसके आप example देख सकते हैं like inkjet printer is there, laser printer, photo printer. So these are even all-in-one printers which can also scan and copy the documents. आपको सिर्फ print करवाना है लेकिन उससे पहले scanning भी करनी है, एक copy भी करनी है, तो all-in-one printers भी आजकल available है. So the printers could be included with your computers. आप computer के साथ प्रिंटर्स को लगा सकते हैं. सो प्रिंटर क्या बन गया आपका? प्रिंटर इज समथिंग नोन एज योर पेरिफेरल. देन स्कैनर्स. Scanners allows you to copy a physical image or a document and save it on your own computer as a digital image. Scanner से क्या होता है? आप एक physical image की copy ले सकते हो और अपने सिस्टम में आप उसको सेव कर सकते हो. तो उसको हम बोलते हैं एक scanned image आपने सेव कर ली है. ठीक है, यहाँ पर भी आपको all in one scanner भी मिल जाते हैं, but you can also buy separate scanners also. So the example would be flat bed and handheld scanners, right? Then speakers और headphones, ये भी peripheral है क्योंकि ये आपके कंप्यूटर या आपके लैपटॉप या आपके टैबलेट के साथ इंक्लूडेड नहीं है, आपको एक्सटर्नली अटैच करना पड़ रहा है. So these are the output devices, which means that it is going to send the information from the computer to the user. In this case, they allow you to hear the sound and the music. So depending on the model, they are going to connect the audio port or the USB port. कहीं कहीं ऐसा भी है आपके systems या laptops में या monitors में where we have built-in speakers also. So that is also a scenario, right?
Then the next periphery, that is microphones. So microphone is a type of an input device. ये एक ऐसी input device है which is going to receive the information from the user. ये user से information लेता है. You can connect a microphone to record the sound or to talk with someone else over the internet. Then web camera. Web camera or webcam is a type of input device which is going to record the videos and it is going to take the pictures also. You can also transmit the video over the internet in real time, which is allowing for video chat or video conferencing with someone else. Then many webcams also include microphone for this reason. So webcam में भी microphone included भी होता है. So all of these facilities are being provided that you can also search on internet. Then game controllers or joysticks. So they are actually used to control the game, computer games. Now there are many other types of controllers that you can use, which includes joysticks, then your mouse, then your keyboards, which is controlling most of your games. Then the next periphery, that is digital camera. Camera lets you to capture the pictures, इससे आप अपनी picture को capture करेंगे and the videos in a digital format, एक digital format में. By connecting the camera to your computer's USB port, you can transfer the images from camera to the computer. And the last thing, that is mobile phones, MP3 players, tablet computers, other devices. So whenever you buy an electronic device, for example, a mobile phone or an MP3 player, you have to check to see if it comes with a USB cable or not. If it does, that means you are most likely to connect with your computer. If it does not does, that means you have to externally buy it and you have to connect it, right? So you can see एक कंप्यूटर के साथ आप इतनी सारी डिवाइसेस को अटैच कर सकते हो. तो जो डिवाइसेस को आप अटैच कर सकते हो क्लास, उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल्स, राइट. एंड द नेक्स्ट थिंग इज द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर. कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सो कंप्यूटर डिवाइस इज मेड अप ऑफ वेरियस एलिमेंट्स which help in its effective functioning and processing. Now there are 5 basic components of the computers which makes us help in processing of the data easier and convenient. So by definition, you can see that there are 5 devices. One is an input device, input unit, output unit, memory unit, control unit, and arithmetic and logical unit. 1, 2, 3, 4, and 5. So these are the 5 basic components of computers, right? Then what are the characteristics of a computer system? Characteristics क्या होते हैं? So see, कंप्यूटर की जो मेमोरी है, that is a characteristics. उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा है. You can save a lot many data in the computer system. Then it is quite speedy. काम आपकी कैलकुलेशन बहुत जल्दी कर सकता है और कैलकुलेशंस करने के साथ साथ आपको एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा देता है. Then it is diligent. Then it is versatile. Versatile means that it can be changed according to the environments. Then it is reliable. You can rely on it, and it is automated. Automation है. Then diligent changes के हिसाब से it can work. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसके actually क्या है, characteristics है, इसके features है. ये सारे features की वजह से ही we people are relying on computers. We people are buying a computer system and we are doing the work on a computers, right? एक बार इसको यहाँ पे बताया है. Speed से I mean that a computer works with much higher speed and accuracy compared to humans while performing the mathematical calculations. Computers can process millions of instructions per second, and the time taken by the computers is microseconds or nanoseconds. Okay, so this is the first characteristic. Second, accuracy. Computer perform calculations with 100% accuracy. Then diligence. It can perform millions of tasks or calculations with the same consistency and accuracy, and it does not feel any boredom or fatigue. इसको थकावट नहीं होता. Then it is versatile. It refers to perform different kinds of work with the same accuracy and efficiency. Then reliability. It is reliable because it is going to give a consistent result for similar set of data, right? Then automation. It can perform all tasks automatically without manual intervention. And then the memory. It has built-in memory called primary memory, which is storing the data. Secondary storage are removable devices like CD, pen drives, etc., which is also storing the data. So all of this makes a computer capable to be, you can say, capable to be used, right?
Then we have two terms class. One is a hardware and another one is a software. So what is a hardware? Hardware, by hardware I mean that it refers to the mechanical device. It is a mechanical device that is making up your computer. जो आपके कंप्यूटर को बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? That it is a hardware. ठीक है, इसके अंदर कुछ interconnected electronic devices भी हैं which is going to which that we can use to control the computer's operations like input and output. एग्जाम्पल आप जानते हैं CPU, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क. अगर आप चाहें so you can go through this picture also. So this is the entire picture of a computer hardware. आप कंप्यूटर हार्डवेयर का इसको पिक्चर देखकर बोल सकते हैं. देख सकते हैं आप इसके अंदर CD DVD का स्टोर है, यहाँ पर हार्ड डिस्क ड्राइव है, यहाँ पर ये पूरा का पूरा मदरबोर्ड है. देयर इज अ साउंड कार्ड, देयर इज अ वीडियो कार्ड, देयर इज अ रैम, देयर इज अ पावर सप्लाई एंड दिस इज द केसिंग. इस केस के अंदर आपने सारा कुछ रखा है. ये क्या है? What is this? This is actually the picture of a CPU. लेकिन CPU के अंदर कितनी सारी चीजें हैं that you can go through it. ठीक है, आप देख सकते हैं. फिर से आप थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं पिक्चर को. So then you can relate and you can understand that in a CPU there are lot many things like there is a power supply. Power supply नहीं होगा तो आपका सिस्टम चलेगा ही कैसे? ठीक है, so there is a power supply. Then you know what is RAM. RAM is random access memory. अभी हम डिटेल में भी करेंगे. Random access memory is an inbuilt memory जो आपके अंदर है RAM and ROM. Then there is a video card. वीडियो कार्ड से आप क्या करते हैं? आप अपनी वीडियो को अच्छी तरीके से देख सकते हैं. अदरवाइज आप देखेंगे कि अगर आप कोई पिक्चर्स देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं तो आपका जो भी इमेज है दैट इज गेटिंग ब्लर्ड और इन बिटवीन भी वो रुक जाता है. देन देयर इज अ साउंड कार्ड. साउंड कार्ड इसलिए होता है कि आप जो भी आप पिक्चर देख रहे हैं उसकी जो परफॉर्मेंस है वो ठीक रह रही है कि नहीं रह रही है, उसकी आवाज़ ठीक से आ रही है कि नहीं आ रही है. So for that you have to keep in mind about, you have to take in charge, give the charge to the sound cards. Okay, so these are the things that you have to understand while you are dealing with a CPU. जब आप CPU के बारे में देख रहे हैं, आप ऊपर भी पिक्चर में देख सकते हैं that there is CD, DVD, there is hard disk drive. So the entire structure is actually a CPU. CPU सिर्फ एक चीज से नहीं बना हुआ है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड हैं. So we have to understand these things. और ये पूरे के पूरे पिक्चर्स आप देख रहे हैं, this is something known as a CPU, right? Then we can proceed to the hardware components. एक बार इन components को हम लोग ने discuss भी कर दिया है यहाँ पर, so you can go through these things also. So what is a computer hardware? Computer hardware is a collection of several computers components working together. तो अभी हमने एक बार देख लिया इतने सारे components जो हैं जब वो साथ में काम कर रहे हैं, so that is something known as a computer hardware. Some parts are essential and others are added advantages. कुछ essential हैं और कुछ हमें ज़रूरत के हिसाब से हम include करते हैं, right? So computer hardware is made up of CPU and the peripherals shown in the picture. फिर से आप देखेंगे ये peripherals है. तो CPU में आपके पास RAM है, आपके पास CD है, HDD है, this is the memory. There is a BIOS. BIOS is basic input output system. ये पहला प्रोग्राम होता है जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं ये रन करता है. इसके साथ साथ देखिए आपने क्या इंक्लूड किया है. कीबोर्ड, माउस, अदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, अदर आउटपुट डिवाइसेस. ये सब क्या है? All of these is known as peripherals, right? Then after that we have software. So what is a software? Software is a set of instructions that drives the computers to do stipulated tasks, that is known as a program. Software instructions are programmed in a computer language, then it is translated to machine language and then it is executed by computer. आपको पता है सॉफ्टवेयर में आप कुछ भी लैंग्वेज यूज करेंगे, आप कुछ भी लिखेंगे, दैट इज समथिंग नोन एज HLL, हाई लेवल लैंग्वेज. नाउ दैट इज बीइंग कन्वर्टेड टू अ मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज मतलब 0 1 की लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है या ट्रांसलेट होता है. तो ये चीज़ों के लिए हमें हेल्प लेना पड़ता है सॉफ्टवेयर का, राइट? So software is basically of two types. One is system software, another one is an application software. एक और छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, वो थोड़ा सा हम जान लेंगे, बट पहले हम जान लेते हैं that what is a system and what is a application software. So system software operates directly on the hardware devices of the computer. It provides a platform to run an application. It provides and supports users functionality. Examples would be Windows, Linux, Unix. देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम ही होता है कि उसको सिस्टम से रिलेटेड सारा काम करना है.
वो यूज़र की ऊपर इतना डिपेंडेंट नहीं है। यूज़र को फंक्शन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, एक दो मिल रहे हैं, इट इज़ ओके, बट इट इज़ एक्चुअली द controlling, it is controlling the entire system. But when I talk of the application software, it is designed for the benefit of the users. ये users पर ही concentrated होता है. To perform one or more tasks, example would be MS Word, Excel, PowerPoint, Oracle. So here the users are directly communicating and they are accordingly doing the jobs, right? So this is a software. आप example भी देख सकते हैं, Excel, OneNote, Outlook, Word, PowerPoint. Here there is a difference between, you can see the bifurcation in software and in hardware. There is a difference that you can go through. Software क्या है? It is a collection of programs to bring the computer hardware system into operation. Hardware क्या है? These are the physical components. Then software includes numbers, alphabets, symbols, identifiers, keywords. ये सारी चीज़ें को include कर आप एक software बना सकते हैं. लेकिन हार्डवेयर में आपके पास डायोड्स है, रजिस्टर्स हैं, आईसीज हैं, इंसुलेटर्स हैं, हार्डवेयर वाली जो चीज़ें हैं उसको इंक्लूड कर आप हार्डवेयर बना सकते हैं. सॉफ्टवेयर कैन वेरी एज पर कंप्यूटर एंड इट्स बिल्ट इन फंक्शंस एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जैसे ही आपके बिल्ट इन फंक्शन चेंज हो रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चेंज हो रही है, आपका सॉफ्टवेयर भी वेरी करता है. लेकिन हार्डवेयर इज कंस्ट्रक्टेड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर systems. Then, software is designed and developed by experienced programmers in HLL, that is high level language. Hardware can only understand low level language or machine language. Then software could be categorized as operating system, utilities, language processor and application software. Hardware like input devices, output devices, memory. This is the scenario of an hardware. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक दोनों के बीच में डिफरेंस है जो हमें पता होना चाहिए, right? Then we have input and output devices. So we know that input output devices, yeah, we often call it as IO devices, is any hardware that allows a computer operator or other systems to interface with a computer. How a user can interact with a computer, for that there are certain devices known as input or output devices. So they are capable of delivering the data और and receiving the data from a computer. ठीक है, अगर डेटा दे रहे हैं तो आउटपुट हो गया, अगर डेटा मिल रहा है that is an input. So an input output device is a piece of a hardware that can take output or process the data. It receives the data as input and provides it to the computer. There are many input output devices, आप देख सकते हैं. The first is a keyboard. Keyboard is the most frequent and widely used input device for entering the data into the computer. अब कीबोर्ड आपका input device है, क्यों? क्योंकि कीबोर्ड से आप डेटा को एंटर कर रहे हैं into the system. Although there are some additional keys for performing the operations, कीबोर्ड का लेआउट कुछ इस तरीके से आपको दिखता है कि जनरली जो कीबोर्ड्स होते हैं दे कम इन टू साइजेस. एक होता है 84 कीज या फिर आप देख सकते हैं 101 और 102 keys, but currently the keyboards are with 104 or 108 keys that are also available for Windows and Internet. Types of keys, एक होती है न्यूमेरिक कीज जिसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिक डेटा को एंटर कर सकते हैं और यूजुअली इसके अंदर 17 कीज होती है. एक होती है टाइपिंग कीज जिसमें आप A to Z और नंबर कीज 0 से 9 दे सकते हैं. एक होते हैं कंट्रोल कीज. कंट्रोल कीज क्या होते हैं, दैट इट इज गोइंग टू पॉइंट एंड कंट्रोल द स्क्रीन. इसमें आपको पता है 4 डायरेक्शंस होते हैं, एक होता है होम, एक होता है एंड, एक होता है इंसर्ट, एक ऑल्ट, डिलीट, कंट्रोल एंड एस्केप. सो दीज आर द कंट्रोल कीज. देन देर आर स्पेशल कीज लाइक एंटर, शिफ्ट, कैप्स लॉक, नम लॉक, टैब, प्रिंट स्क्रीन, ये कुछ स्पेशल कीज आती हैं. देन देर इज फंक्शन कीज. फंक्शन कीज 12 होती हैं, दैट इज F1 to F12, जो आपको टॉप मोस्ट इसमें दिख जाती है, टॉप मोस्ट ऑफ द कीबोर्ड में. यू कैन सी द पिक्चर ऑल्सो. दिस इज हाउ a keyboard looks like, that everyone knows. ठीक है, तो ये आपका पता होना चाहिए. कीबोर्ड के अंदर बहुत तरह की कीज होती हैं. एक क्या होती है क्लास, न्यूमेरिक की होती है, एक होती है टाइपिंग कीज, another is a control key, special key and function keys. So 1 2 3 4 5 टोटल 5 कीज से जाकर आपको क्या मिलता है क्लास, आपको मिलता है द इंटायर 104 या फिर 108 का सेट मिलता है, राइट? Then the next input device is mouse. The next input device is mouse. So you can see it in the picture. The most common pointing device is the mouse. Mouse को हम लोग क्या बोलते हैं, pointing device. It is used to move a little cursor across the screen while clicking or dragging. आपको move करने के लिए ये काम करता है. Cursor will stop
if you let go of the mouse. The computer is dependent on you to move the mouse. It won't move by itself. ठीक है? So as a result, you can say that yes, it is also an input device. Mouse is also an input device. It is an input device that lets you move the mouse on a flat surface to control. जैसे एक flat surface के ऊपर हम इसको रखते हैं ताकि आप coordinates और movements जो है अपने pointer से screen पर move कर सके. अब यहाँ पर you have actually three buttons. A mouse actually have three buttons. One is this left one, another one this is the right one, and the scrolling button. Scroll button. So there are three buttons in the mouse. The left button could be used to select or move the things, while right button could be used when you want to display the extra menus, but you can also change the left and right functionalities with the help of the settings. सेटिंग्स में जाकर आप इसको चेंज कर सकते हैं. अगर सेटिंग्स नहीं आपको समझ में आएगा तो कंट्रोल पैनल में जाकर चेंज कर सकते हैं. अदरवाइज यू हैव समथिंग नोन एज पर्सनलाइजेशन, उसमें भी जाकर आप चेंज कर सकते हैं. तो वहाँ पर भी आप उनकी फंक्शनैलिटीज चेंज कर सकते हैं, बट बोथ विल परफॉर्म इन द सिमिलर वे. देन द नेक्स्ट थिंग दैट इज जॉयस्टिक. जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है दैट इज यूज्ड टू मूव द कर्सर ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन. Then a spherical ball, you can see that there is a ball, spherical ball, which is attached to the bottom and the top here and here. ठीक है, to the bottom and the top end of the stick. So in a socket, the lower spherical ball जो है now this slides, ये move करता है. ठीक है, you can move the joystick in all the four directions. आप चारों directions में move कर सकते हैं, ऊपर नीचे हर direction में. And its function is comparable to that of a mouse. It is primarily used in a computer-aided design and for playing the video games on a computer, right? Then the next type, that is a light pen. Light pen क्या है? It is a type of pointing device that looks like a pen. ये pen की तरह दिखता है. It is used to select a menu item or draw on the monitor screen. आप कुछ भी select करना चाहें इससे कर सकते हैं. A photocell or an optical system is enclosed in a tiny tube, and when the tip of the light pen is moved across the monitor screen while the pen button is pushed, the photocell sensor element identifies the location and provides the signal. तो यहाँ पर you can understand it in this way कि इसके टिप में क्या होता है कि एक सेंसर लगा हुआ होता है, और जब उस सेंसर को आप स्क्रीन पर मूव कर रहे होते हैं then it is going to give the signal to the CPU and then it is going to perform accordingly, right? Then the next type of input device is scanner. Scanner is an input device कुछ इस तरीके से that functions similarly to a photocopier. It's employed when there is an information on paper that needs to be transferred onto the computer's hard disk for subsequent manipulation. तो स्कैन करने के लिए आपको एक स्कैनर की ज़रूरत होती है. तो ये क्या करता है? It collects the images from the source. Source से images को collect करता है. Then it converts to a digital format. ये एक digital format में convert कर कर उसको disk में store करता है. And before they are printed, ये images आप modify कर सकते हैं. They can be remodified. But before printing. प्रिंट होने के बाद कैसे मॉडिफाई करोगे? नाउ दिस इज कॉमन सेंस. तो प्रिंट होने से पहले आप चीज़ों को स्कैन कर सकते हो. स्कैन करने का मतलब है जो भी इमेज है आपकी वो डिजिटल इमेज में कन्वर्ट होगी. That would be converted to the digital image and then you can take out a printout of it. Only then you can take a printout of it, right? Then we have OCR. Now that stands for an optical character recognition. Now it is a device that reads the printed text. जो भी print हुआ है उसको ये read करता है. टेक्स्ट को स्कैन करता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर और उसको मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट करता है. ठीक है, आप देख सकते हैं. देन देयर इज अ बारकोड रीडर. बारकोड रीडर इस तरीके से है. ये भी एक डिवाइस है जो कि रीड करता है. नाउ इट रीड्स द बार कोड. ये इस बारकोड को रीड करता है. डेटा जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइट एंड डार्क लाइंस. देयर आर lines, both dark lines are also there and light lines are also there, and that is being read by this barcode reader. So what it does, it scans a barcode image, then it converts it to an alphanumeric value. ये डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं करता है, ये उसको एक अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करता है और फिर कंप्यूटर को भेज देता है विच इज बीइंग कनेक्टेड, राइट. देन वी हैव अ वेब कैमरा. ये सब बातें हम अभी ऊपर कर चुके थे तो थोड़ा सा इनको हमें डिटेल में करना था. तो वेब कैमरा कुछ इस तरीके से दिखता है.
तो ये क्या करता है, इट रिकॉर्ड्स अ वीडियो इमेज ऑफ द सीन इन फ्रंट ऑफ इट, जो भी उसके सामने सीन है उसकी वीडियो इमेज ये ले लेता है. So we can call that webcam is also an input device. It is either built inside the computer or it has to be attached through a USB connection. A webcam is a computer connected tiny digital video camera. It is known as web camera because it can take the images and it can record the video. Images ले सकता है और video record कर सकता है. These cameras come with the software which is to be installed in the computer in order to broadcast the video in real time over the internet. It can shoot the images or HD videos. However, the video quality isn't as good as other cameras. So you have to check कि इसकी क्वालिटी अच्छी है या किसकी क्वालिटी अच्छी है, जिसके अकॉर्डिंग भी आपको अच्छी लगती है that could be used further, right? तो अभी तक हमने इतने सारे इनपुट डिवाइसेस पढ़ लिए. सो यू कैन सी, आई थिंक हमने यहाँ से स्टार्ट किया कीबोर्ड से. सो कीबोर्ड वाज आवर फर्स्ट इनपुट डिवाइस, देन माउस सेकेंड इनपुट डिवाइस, देन जॉयस्टिक थर्ड इनपुट डिवाइस, देन लाइट पेन फोर्थ, scanner fifth, OCR 6, barcode reader 7, then web camera 8. So at least जब आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है that gives some examples of input devices. So I have told you 8 devices in detail, so you can at least remember 5 to 6 and you can use them and you can tell it, right? Then we have the output devices. So the first output device, very famous and very common output device, that is a monitor. Monitor is also known as VDU, that is visual display units. They are the computer's primary output device. It creates the image by arranging the small dots known as pixels, and they are in the rectangular pattern. And the amount of pixels determines the image sharpness. जितनी pixels जैसे accordingly act करते हैं उतना ही sharp आपका image दिखता है. So there are two kinds of viewing screen. One is a cathode ray, another one is a flat panel display cathode ray tube monitor. तो cathode ray tube में क्या होता है, that the pixels are minuscule visual elements that make a CRT display. बहुत ही छोटे छोटे elements होते हैं. The higher the image quality or the resolution, smaller is the pixels. जितनी quality आप अच्छी चाहते हैं उतने pixels कम होने चाहिए. Then we have flat panel. Flat panel में क्या होता है, it is a type of a video display with less volume, weight and power consumption. यहाँ पर power consumption भी कम होता है, volume भी कम होता है, weight भी कम होता है, and they can be hung on a wall or it can be worn on a wrist. Flat panel displays are usually calculators, video games, monitors, laptop, computers या फिर graphical displays में use करते, ठीक है. So this is the first type of output device. The second type of output device is a printer. बताया आपको मैंने, printers are an output device that allow you to print the information on a paper. आप एक पेपर के ऊपर information को print करना चाहे तो आप printer का use कर सकते हैं. So there are two types of printers. You can see this is how a printer looks like. So there are two types of printers. One is an impact printer. Impact printer में क्या होता है ना class, characters are printed on the ribbon. एक रिबन के ऊपर एक रिबन होता है, उसके ऊपर कैरेक्टर्स प्रिंट होते हैं विच आर सब्सिक्वेंटली क्रश्ड अगेंस्ट अ पेपर. उसको हम लोग जैसे जो पुराने ज़माने का टाइप राइटर होता था ना, जैसे जैसे आप फॉरवर्ड मूव करते जाएंगे पिछले पिछले जो भी लेटर्स हैं वो टाइप होते जाते हैं. सो वाई डू वी यूज़ इट, बिकॉज दे हैव द लो कॉस्ट, दे आर क्वाइट नॉइजी, and because of the low cost it is ideal for large scale printing. So to create an image there is a physical contact with the paper also. But there are something known as non-impact printers. Non-impact printers में क्या होता है ना क्लास, कि जो कैरेक्टर्स होते हैं they are printed without the need of ribbon. यहाँ पर हमें रिबन की ज़रूरत नहीं होती है. तो because these printers print a full page at a time, ये एक ही वक्त में एक टाइम में पूरा का पूरा पेज जो है प्रिंट कर देते हैं. इसीलिए कभी कभी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को हम लोग पेज प्रिंटर्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं क्लास, पेज प्रिंटर्स. इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फास्टर होते हैं, इनमें नॉइज नहीं होती है, क्वालिटी एक्सीलेंट है, एंड दे कैन सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ टाइप फेसेस एंड कैरेक्टर साइजेस, राइट. देन देयर इज अ शॉर्ट डिफरेंस बिटवीन एन इनपुट एंड एन आउटपुट डिवाइस. आप देख सकते हैं इनपुट डिवाइस में क्या होता है क्लास, डेटा इज एक्सेप्टेड फ्रॉम द यूजर. आउटपुट डिवाइस में इट शोज द डेटा आफ्टर प्रोसेसिंग टू द यूजर.
प्रोसेसिंग होने के बाद डेटा कैसा दिखेगा उसको हम बोलते हैं दैट वुड बी डन विद द हेल्प ऑफ एन आउटपुट डिवाइस. देन it accepts the user's data and transmits it to the processor for saving it in the secondary memory or processing. ये डेटा यूजर से लेने के बाद उसको प्रोसेस करता है. यहाँ पर क्या होता है, ये प्रोसेसर से डेटा लेता है और फिर उसको रिटर्न करता है यूजर को. ठीक है. इनपुट डिवाइसेस में डिजाइनिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, आउटपुट डिवाइस में कम कॉम्प्लेक्सिटी होती है. Input device में they are used to accept the data and here it is going to display the data. Example keyboard mouse, here is the example monitor and printer, right? Now the next topic that is the generations of a computer. देखिए मैंने क्या किया है ना, इस एक पर्टिकुलर लेक्चर में वो सारे बेसिक टॉपिक्स करवा दिए हैं जो कि यूजुअली सिलेबस में होता है और हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग छोड़ देते हैं या फिर कहीं देखते हैं कोई जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर कहीं मिल रहा है, फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कहीं मिल रहा है, फिर सीपीयू के कंपोनेंट्स कहीं मिल रहे हैं. तो इसको मैंने पूरा मर्ज कर कर पूरे यूनिट को एक ही लेक्चर में इन्वॉल्व कर दिया. सो यू गो थ्रू द entire lecture, you prepare your notes and you will be done with the basic things. You would be understanding the entire basic systems, basic things that are involved in a computer, right? So next thing is the generations of a computer. So the first generation computer came from 1940 to 1956, then 56 to 63 second, then third 64 to 71, then fourth 1971 to present and the fifth is present and beyond जो इसके बाद भी जाएगा. तो अब देखते हैं एक एक कर कर कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या ऐसा था which we should keep in mind. So in the first generation computers, the first thing that you have to keep in mind is vacuum tubes were used 1940 से 1956 में. The technology behind the primary generation computer was a fragile glass device that is known as a vacuum tube. Vacuum tube क्या होता है क्लास? एक बहुत ही पतला सा एक ग्लास का डिवाइस होता है, उसको यूज किया जाता था. और उस समय क्या होता था, जो कंप्यूटर्स होते थे they were very heavy and they were really large in size. आप मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, पूरा कमरा बड़े बड़े हमारे जो होते हैं, हमें सिस्टम्स जो है वहाँ पर रखने पड़ते थे जब 1940s का ज़माना था तब, क्योंकि तब कंप्यूटर्स वर नॉट देयर, तब आए भी नहीं थे इसलिए. अब क्योंकि वो इतने मोटे हुआ करते थे तो दे वरंट वेरी रिलायबल, आप उन पर रिलाई नहीं कर सकते थे. एंड प्रोग्रामिंग ऑन देम वाज अ रियली टीडियस टास्क, और उस समय उतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स पर प्रोग्रामिंग करना तो ऑलमोस्ट ही नामुमकिन था, as they used the high level programming language और उस समय कोई OS भी नहीं था. And then at that time there was no OS. Just a moment. तो उस समय कोई OS भी यूज नहीं हुआ करता था. तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में इतने सारे प्रॉब्लम्स भी थे that you have to keep in mind, आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. So the computers were very heavy and they were very large in size. They weren't reliable and programming was a very tedious job. As they used high-level language and then there was no OS. कोई operating system इस समय में हमारे पास नहीं था, right? Then the first generation computers were used for calculations, for storage and control purpose. वो इतने bulky, इतने heavy होते थे that they needed full room और उनको इतनी ज़्यादा electricity की ज़रूरत पड़ती थी. They needed a lot of electricity, right? So the first generation computers में जो main computers थे, आपको नाम पता होना चाहिए. One is ENIAC, one is ADVAC and another one is UNIVAC. ENIAC is Electronic Numerical Integrator and Computer. This was built by Presper Extract and John V. Mauchi. Was a general purpose computer, बहुत heavy, large और इसमें 18,000 vacuum tubes लगे हुए थे. Then came ADVAC, that is Electronic Discrete Variable Automatic Computer, was designed by von Neumann. It could store data also as an instruction and thus the speed was enhanced. Then came UNIVAC, that is Universal Automatic Computer, was developed in 1952 by Eckert and Mauchi. दोनों ने मिलके किया था. अब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स. मेन कंपोनेंट क्या है? वैक्यूम ट्यूब. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज 0101 यूज होता था. मेन मेमोरी आपको अगर स्टोर करनी तो मैग्नेटिक टेप्स या फिर मैग्नेटिक ड्रम्स में रखनी पड़ती थी. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पेपर टेप पंच्ड कार्ड्स. स्पीड बहुत ही स्लो और साइज उतना ही ज़्यादा. एग्जाम्पल अभी आपको ऊपर बताया है बट यू कैन कीप इन माइंड IBM 650, IBM 701, ENIAC and UNIVAC 1, right?
Then came the second generation computers. Second generation computers class आए हैं 1956 से 63 में. Now they used a technology that was known as transistors rather than the bulky vacuum tubes. ये क्या use करते थे? Transistors. Another feature was a core storage. Transistor may be a device which is composed of a semiconductor material. और transistor से क्या होता है? It is actually amplifying the sign, or it is opening or closing a circuit. Transistors were invented in Bell Labs. The use of transistors made it possible to perform powerfully with due speed. It reduced the dimensions and the price, and thankfully the warmth too, that was generated by the vacuum tubes. तो इतना electricity का जरूरत यहाँ पर नहीं बढ़ रहा था. Then CPU, memory, programming languages, input and output devices came into force within the second generation. Programming language धीरे धीरे second generation में आने लगी, and we were shifted from high level to programming language, and we have made the programming comparatively a simpler task. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं फोर्ट्रॉन जो 1956 में आई थी, एल्गोल 1958 में, कोबॉल 1959 में. इनके मेन जनरेशंस आप देख सकते हैं. Main characteristics: programming language, machine and assembly language. Memory, magnetic core and magnetic disk. Input output devices, magnetic tape and punch devices. Power and size थोड़ा कम, lower power consumption और heat भी कम आती है. Second generation के example PDP-8, IBM 1400 series, IBM 7090 and 7094, UNIVAC 1107 and CDC 3600, right? Now this is something that you need to keep in mind. जी आपको थोड़ा you have to go through the lecture again and again, and you have to memorize the things. Then came the third generation, where we used integrated circuits from 1964 to 71. So during the third generation, the technology envisaged a shift from huge transistors to ICs. Here, a variety of transistors were placed on silicon chips known as semiconductors. So the most important feature was the speed and the reliability. IC was made from silicon and also known as the silicon chips. एक single IC जो होता है, it has many transistors, resistors, capacitors which are built on one thin slice of a silicon. So the value size was reduced and the memory size was increased. यही तो हमें चाहिए. और प्रोग्रामिंग भी अब बहुत अच्छे से चल रही थी. एग्जाम्पल बेसिक beginners all purpose symbolic instruction code. Mini computers also find their shape during this era. तो आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं. मेन कंपोनेंट IC, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज HLL, memory, magnetic core and magnetic tape or disk. Input output devices, magnetic tape, but monitor, keyboard, printer अब आना start हो गई थी third generation में. Example: IBM 360, IBM 370, PDP-11, NCR 395B, 6500, UNIVAC 1108. ये कुछ versions हैं. Then the fourth generation computers from 1971 to present. Then the first microprocessors were used. The large-scale integration LSI circuits built on a single chip known as microprocessors came into the picture. The most advantage is that एक processor microprocessor जो होता है उसके अंदर सारे circuits होते थे, like arithmetic, logical या control functions perform करने के लिए एक छोटी सी chip में. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? microprocessor. उसी के अंदर हमने सारे functions डाल दिए. Now the computers using the microchips उसको हम बोलते हैं microcomputers, and the generation provided even smaller size of computers with larger capacities. That's not enough. Then very large scale integrated circuits replaced LSI. तो LSI large scale को very large scale integrated chips ने भी remove कर दिया. Intel 4004 chip was developed in 1971. It located all the components of the PC from the CPU and memory and on a single chip, and then it allowed the dimensions to reduce drastically. बहुत ही छोटा आपका कंप्यूटर हो गया. Technologies like multi-programming, multi-processing, time sharing, operating speed, virtual memory, ये सारे के सारे आ गए. And the concept of private computers and computer networks also came into the picture when we were talking of the fourth generation, right? So the main component VLSI, memory, second semiconductor memory like RAM, ROM, input output devices, pointing device, optical scanning, keyboard, monitor, printer. Examples: IBM PC, Star 1000, Apple II, Apple Macintosh, Altair 8800, right? Then the last type of generation, the fifth generation.
Here the computer is of AI. अब जो generation चल रहा है, now this is the era of AI. So it allows the computers to behave like humans. AI का मतलब क्या है? Artificial intelligence. Intelligence लेकिन artificial. So it is actually हम क्या करना चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि कंप्यूटर जो है वो humans की तरह behave करे. So it is often seen in programs like voice recognition, area of medicines and entertainment. जैसे Siri ले लीजिए, जो भी आप ले रहे हैं वो सब एग्जाम्पल्स उनकी वॉइस रिकॉग्नाइज कर कर वो आपको अप्लाई कर रहा है. विद इन द फील्ड ऑफ गेम्स ऑल्सो इट इज शोइंग रिमार्केबल परफॉर्मेंस. तो द स्पीड इज हाईएस्ट, द साइज इज स्मॉलेस्ट. चाहिए हमें चाहिए छोटा सा साइज और स्पीड एकदम हाईएस्ट हो. दो नॉट 100% ए आई हैज बीन अचीव टू डेट. अभी तक 100% ए आई अचीव नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है. बट कीपिंग इन द साइड ऑफ द प्रेजेंट डेवलपमेंट्स, इट इज ऑफन सेड that the reality would the dream would be become a reality very soon. So in order to summarize the features of the varied generations, it is often said that a big improvement has been seen so far because the speed and accuracy is there, right? So आप देख सकते हैं main features based on an artificial intelligence. It uses ultra scale integration technology and parallel computing. Then parallel processing method is actually using two or more microprocessors to run simultaneously. पैरेलल प्रोसेसर का मतलब है एक वक्त में एक काम करने से ज़्यादा, एक के साथ एक से ज़्यादा सीपीयू अगर आप अटैच कर दे रहे हो, मोर देन वन सीपीयू, इफ दे आर अटैच, दैट इज नोन एज द parallel processing is also involved in this fifth generation. Size, portable and small size, input output, trackpad, touchscreen, pen, speech input, light scanner, printer, keyboard, monitor, mouse. An example, desktops, laptops, tablets, smartphones, right? तो इस तरीके से आपको 5 generations हमने करवा दिए. तो that would be all. I would like to say thank you to you, but before that, before saying thank you, मैं एक बार आपको एक gist दे दूंगी यहाँ पर. वो gist ये है कि आपने अभी तक इसमें क्या पढ़ लिया. आपने पढ़ लिया what is the basic definition of a computer. कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं. कंप्यूटर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज हार्डवेयर एंड अदर वन इज सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर के फर्दर एग्जांपल्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर के फर्दर एग्जांपल्स क्या होते हैं. देन देयर इज एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, वो क्या होती हैं, उनके फर्दर एग्जांपल्स क्या होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए. देन केम द जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के जनरेशंस में हमने 5 जनरेशंस पढ़ा. 5 जनरेशंस में टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है 5 तरीके से, वो हमने जाना. कौन कौन से किस किस जनरेशन में स्पीड हमारा बढ़ता जा रहा है, ये सब हमने जाना. एंड ये पूरी तरीके से हमने पूरा का पूरा एक ही लेक्चर में आई ट्राइड टू कंप्लीट द इंटायर सेशन. सो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर. अगर आपको, इफ यू हैव understood the things and if you are liking the lectures, please do like, share and comment, and please share it more and more so that more of the people would be benefited with it, right? You can see here is our channel name youtube.com/Swaroop Korai. तो इस चैनल के अंदर हम लोग का सब कुछ है. like we have brought together a lot many things, like for the recruitment purpose we have there, for the basic things we have there, and for the main papers, like in many colleges there are the main papers which are not clear. So this is an initiative where we are helping you people to understand, but help तभी होगा जब आप लोग खुद अपना help भी करेंगे. So you have to go through the things. आपसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप पूरे के पूरे चीज़ें देखिए. जैसे हमने इतने सारे जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ा, इसमें अगर आपको कुछ डाउट होता है, देन अगर आपको डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है इनपुट आउटपुट डिवाइस का, अगर आपको आउटपुट में कोई एग्जांपल्स में और फर्दर एग्जांपल्स इंक्लूड करने हैं, इनपुट डिवाइसेस में हमने इतना डिटेल में पढ़ा, इसमें कोई एग्जांपल्स आपने इंक्लूड करने हैं, या फिर अगर आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंस क्लियर नहीं है या जो भी चीज़ है, तो ये सारी चीज़ें हमने करी हैं. देन जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कंप्यूटर के पढ़ी हैं इसके अंदर, फिर कंप्यूटर होता क्या है, तो पूरा फिर पेरिफेरल्स इसमें क्या अटैच किए जाते हैं, फिर बेसिक स्टार्ट किया हमने सर्वर्स क्या है. तो बेसिक टर्म्स जो भी होती हैं, टैबलेट कंप्यूटर क्या है, लैपटॉप क्या है, ये पूरा का पूरा हमने इसमें कवर करवाने की कोशिश करी है. सो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर, और आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर के फर्दर कितने ज़्यादा पर्पसेस हैं. सो दिस इज़ द बेसिक लेक्चर. इसके बाद हम बहुत डिटेल लेक्चर्स भी लेकर आएंगे, बट फॉर दैट यू हैव टू कीप लाइकिंग एंड कीप शेयरिंग, राइट? सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास. Thank you. I will see you in the next lecture very soon. Thank you.